नमस्ते शकूर, सब ठीक है? बढ़िया। हम अभी आज आपके इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, तो आपने क्या इंस्ट्रूमेंट लेके आए हैं आज? मेरे पास अलगुजा है, डबल फ्लूट बोलते हैं इनको। हाँ, अलगुजा और डबल फ्लूट इंग्लिश में बोलते हैं ना? डबल फ्लूट बोलते हैं। हाँ, तो उसका क्या सिस्टम है बजाने का, ये बताइए। ये बजाने का एक तो इसमें ये नर ये मादा होती है। अच्छा, इनको नर और मादा बोलते हैं। एक लेडीज और एक जेंट्स। और इनको एक ये ड्रोन चलता रहता है, एक सुर। हाँ। एक में ऐसे सुर लगता रहता है। अच्छा, और सही इसके है। ऊपर पैर में लगते हैं ये उंगली। अच्छा, तो ये मेलोडी के लिए है? हाँ, मेलोडी के लिए। और ये ड्रोन के लिए? ये ड्रोन के लिए। ठीक है। अच्छा, क्या बात है। और ये क्या चीज़ है शकूर, वो जो ऊपर है? हाँ, ये भी बताइए। इसको मोम बोलते हैं। मोम। अच्छा, जो मधुमक्खी का होता है ना, अच्छा, उनके छत्ते से निकाल के अच्छा। वो चिपकाते हैं। अच्छा, उनको सुर करना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। एक बार आप बजा सकते हैं? हाँ? उसकी आवाज़ कैसी है? क्या बात है। वाह। क्या बात है, क्या बात है। और आपके वो सांस लेने का टेक्निक भी है ना, इसके बारे में भी कुछ हाँ, बता वही सकते हैं? इसमें एक तो बांसुरी आती है, एक सिंगल, उसमें रुक रुक के मतलब सांस लेना पड़ता है। हाँ, इसमें मुंह का सर्कुलर ब्रीथिंग बना के फिर इसमें। हाँ, ये तो फिर नाक से सांस लेते हैं? हाँ, नाक से सांस लेते हैं और मुंह से बाहर मुंह जाते से हैं। बाहर जाते हैं। अच्छा, ये भी। वैसे। अच्छा, ये भी काफ़ी मुश्किल होगा ना? अच्छा, अरे वाह। अच्छा, क्या बात है ये। और ये मैंने देखा, ये थोड़ा अलग है ना जो? इनको बोलते हैं मतलब जोड़ी। हाँ, मतलब एक से बराबर साइज है ना? बराबर साइज। हाँ, और ये? और इनको बोलते हैं डैडी जोड़ी। अच्छा, तो उसका ट्यूनिंग अलग होगा? ट्यूनिंग भी अलग है ना? और सुर भी इसके सुर भी अलग वो है ना? अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, बहुत अलग है।
वाह, क्या बात है. Thank you so much, Thank Shakoor. you. So one of the projects that we are doing with Tour Collective and Purnima University is a music instrument preservation project. So we look at all the traditional instruments from the state of Rajasthan and how we can keep those instruments alive for again future generations. Because what we noticed in our work is that a lot of the string and wind instruments from Rajasthan are actually very drastically disappearing. And this has to do mainly, of course, with the come of the harmonium, the German instrument actually, who is taking over the music scene in Rajasthan mainly because it's easy to play, it doesn't need to be tuned, it's easy to carry everywhere. And this takes over all of the, normally instruments that were used to accompany singing. So, for example, the Sindhi sarangi, the kamaicha, or even Algoza, Sarinda, who has already largely disappeared in the state of Rajasthan. All of these string and wind instruments had to, take a backseat because of louder instruments like harmonium, like dholak, even kartal, percussion instruments that come into the picture, and then take away the softer sounding and more difficult, complex instruments to play. So we've mainly focused on that during our preservation project, on how we can make these instruments again attractive for younger generations. And again, when we were here in this trip with the students, we saw that they also actually had the opportunity to hold the instruments and try to play it, and also notice how difficult it actually is. Learn how you tune it, learn how you play it, learn how it is made. So all of these type of engagements, I think, is important for keeping the instruments alive. But then at the same time, we also look at how to contemporize instruments sometimes. So we're even looking at better systems for wind and string instruments to be amplified, which is also very important, I think. If we can amplify it better, then it can be brought to larger stages, it can be recorded better. So it also is more suitable for current times. And all of that we're trying to project by creating community centers and spaces where these instruments can be kept alive. And we look at all of the main central villages in Rajasthan where these instruments are mainly played and made. We go to these villages, like for example, we go to Hamira village, where the last family actually who really professionally plays Kamacha lives, and also the last person of the community, unfortunately, who actually makes the craftsperson, lives and still makes the instruments. And we want to set up a center there for those instruments. So if we look at age of players of these instruments, again, the craftsperson who makes the kamaicha is 60 plus, is the last of his generation. He has one cousin who wants to try to learn it but really can't make it. So as soon as a craft person disappears, then also automatically the instrument will disappear, because there's nobody to make the instrument. So how will the musicians play? If we look at the musicians as well, that the same issue appears, where we see that very often the youngest musician is actually above 40. Like for example, with the Algoza, the double flute that we also recorded in our session here, Shakoor is one of the youngest players of Algoza, and he's in his 40s. So that is the harsh reality of the state of the instruments. Yeah.